Good evening to all. Jai Jagannath. नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं जाग्रतेन भद्राय वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्र सेव्यं देवानां सारमेशं सुजन परिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि परम कारुणिक अनंत कोटि ब्रह्मांडर मौडमणि कोटि कोटि ओडियांकर हृदयर आराध्य देवता समग्र विश्वचराचर स्रष्टा आनंद कंद परमानंद सचिदानंद अखिल रसघन विग्रह विश्व वेदनार वैद्य देवाधिदेव श्री श्री जगन्नाथंकर चरण कमल कोटि कोटि प्रणाम. Good evening to all. I offer my respectful obeisance unto the lotus feet of my spiritual guru, Lord Jagannath. I offer profound veneration to all the devotees of Lord Jagannath present over here in this virtual platform. On this auspicious day of World Health Day, we are going to observe, and on this auspicious day, the theme is being health for all. So I, on behalf of this webinar team, being the host and convener, welcome all the viewers, respected viewers, to this Google platform. Today, we are going to observe 145 national webinar. And I'm really happy to inform you that today also we are having a new principal. Old principal has already been retired, and Dr. Manju Pattanaik ma'am, the principal, will join here. Respected principal ma'am, the president of this 145 national webinar organized by the Rover Ranger unit of Maharshi College. Esteemed Dr. KP Mr. the vice president, Bharat Scouts and Guide, and the state chief commissioner, Odisha State Bharat Scouts and Guide, the real inspiration behind all this series of national level webinar. Revered chief speaker, she is Dr. Prajna Paramita Giri, the associate professor of the AIIMS Bhubaneswar, department being community medicine and family medicine. And she's very young, very dynamic. And within just today morning, when I decide to have this virtual meet, and I request her without any hesitation, she told me, yes, ma'am, I'll join. So thank you, madam. I welcome you to this Google platform. Now, virtually, I want to welcome ma'am. Thank you, ma'am. As all of you know, today, the 7th April, the World Health Day, which is global observation of विश्व स्वास्थ्य दिवस जहाँकि आमे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इटी प्रमोट हेछि आमे समस्त जानिछे 17 गोल्स हमर जो अछि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ता भीतर हम जदि जिबा तृतीयटी होछि टू मेंटेन गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग सो आमे सेही दिनटी को आज दिनटी को मन पकेइबा हमर 17टी गोल भितरु थर्ड गोल को जो गोल खाली हमको मन पकई देबने 365 दिन जाक आमे चेष्टा करिबा हमर हेल्थ को किपरि सुरक्षित रखिबा पई आज लोगो जदि आपण माने देखि पारुथिबे सेतरे सुंदर भाबरे दिया जाईची द डेली लाइफ हाउ टू मेंटेन द डेली लाइफ फर्स्ट वी स्टार्ट विथ फिटनेस
For fitness, we need fruits, vegetables, water, 2 liter water per day, then 5 hours per day, walk on fresh air. So this is very uh, colloquial things, but sometimes we fail to maintain at least out of one, at least we should, but we never did it. However, why we have to do this? Because life is very precious and we love ourselves. That is the most important part. Hence, this World Health Day, which is we generally globally observe as a health is being our human rights. And for the Bharat Scouts and Guide, all of you know that this is the platform, I mean the pillar on which the foundation stone of Bharat Scouts and Guide. There are 4 pillars: character, health, handicap, and skill. Sure, this is one of the most important pillar. So we have to check it out whether we are healthy or not. We are healthy means not in width wise or weight wise, but we must be healthy in every atmosphere, in everywhere. From healthcare professionals to policy makers, all individuals, families with young children, elderly, we all have a role to play in our personal health, the well-being of those around us. So as first world resource emerge that continue to benefit the overall quality of life. For what? For the masses, the total public, or the whole masses. An important factor to those advancement is the ability to have consistent access, very close access to them. So as science continuously is finding ways of extending the duration, that is quality of our life, the only right for us to want all people to have access to this advancement. That is the each year thousands of lives they are lost because of they are not getting preventable disease, or simply they based on geographical limitations. So if we'll affordable, we are access to affordable health care, then only people are living meaningful or productive or disease free life. So if we'll go to the World Health Organization, healthcare cost puts about 100 millions people into extreme poverty each year because of out of pocket spending. So in this respect, we not only observe this, but we accept it as a challenge, and we accept it as an opportunity to release the World Health Statistics Report, because the annual publication of health data covering the wide range of area from newborn child to um environmental risks. The report also provide data on the progression of the universal health coverage. So what we actually want to know, universal health coverage is the number 1 goal of the World Health Organization. Through achieving this, everyone would be given access to the care they need. So when they need it, World Health Day is the opportunity or the time to turn back to that aspiration. So like any great feat, the journey doesn't come without challenges. So today, we invite everyone to celebrate the Health Day. That is Swasthya Hi Sampada. So we must be healthier tomorrow, and for everyone, health is very precious. So with this, I would like to request Dibyanshu Padi, the smallest, the youngest cup of our webinar, to start with sloka and chant the sloka. Then I'll request our chief guest to speak. Over to yes, 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 Dibyanshu. ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्वन्तराय अमिताय हस्ताय सर्वमाया विनाशाय त्रिलोकनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। Happy Health Day. Okay. Today you are having some problem, no? Okay, okay, no problem.
So we are having our speaker today, Associate Professor Dr. Paramita Giri, who is associated with AIIMS, the All India Institute of Medical Science in Bhubaneswar, and she has been working since uh, long back. Before that, 3 years, she joined as senior resident in SCB Medical College, Cuttack. 4 years as assistant surgeon in Government of Odisha. Then again 3 years as assistant professor regular in AIIMS, and now 2 years 6 months as associated professor in AIIMS. In the Department of Medicine, Family Medicine and Community Medicine, which is a very new department in health sector is concerned. So, what we exactly want to know, she is very dynamic and she is having a brilliant character. The studentship, but the why there is prevalence of overweight and why obesity is one important factor nowadays, and we are very much concerned about that. So regarding that, and the adolescents, which is correlates in Bhubaneswar city, she is having a very good analysis over that. Then she has done many um, seminars, workshops on these programs, along with agency like UNICEF, our PBTG, that is Vulnerable Tribal Groups, funding agencies, and so many organizations. What I want to say, she's having very experienced in that way. Why health is very important for us, and she's having also relevant publications in many um, publications like G. Giri and PP Arjun and MC Behera, PK Subhas, like COVID-19 vacancy process in an urban primary health center of Odisha. Then she has already published in the effectiveness of a short structured training program on knowledge of healthcare providers and program managers involved in maternal and child health program in Odisha, and a quality improvement study. Then she is having Hansda and U Sahu, S Biswas and S Mahanti, CR Barik, S Giri, a group or a team, and they have studied about how much ambulance personnel know about basic life support. Wonderful. A hospital-based study from Eastern India, and she has also studied and published this book, The Pattern of Morbidity and Use of Social Security Schemes among the Steel Plant Workers in an Industrial District of Orissa. So you see, the doctors, they are not professionally only doctors, but they are doing a lot of work because they have to grow. And for their growth, they have to know the status of health statistics, and accordingly they have to develop or they have to update their knowledge. So let us listen to Professor Paramita or Giri ma'am from AIIMS, who has given his kind consent to be with us for 40 minutes. We'll request him her to join with us if she can after 10 to 20 minutes more for interaction. Sure, over to Pragya ma'am. Namaskar. Thank you, Namita madam. And I'm really mesmerized by the stroke of Dibyansu. A very, I would say, congratulations, Dibyansu. In such a tender age, you can recite good slokas. So keep it up, better. And thank you, madam, for this elaborate introduction. So ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସକାଳେ ହିଁ ମୁଁ କଥା ହେଲି ଆଉ ଜାଣିଲି ମତେ ଗୋଟେ ଏମିତି କହିବାର ଅଛି। We are used to all these webinar, but first is who are the audience? Because ଆମେ କଣ କରୁ ଯେତେବେଳେ କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ଭୁଲି ଯାଉ କୋଉ ଅଡିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି। So we started using diagrams, medical diagrams. So difficult way to communicate. But a most important part of medical profession is communication. I don't think anybody who is there who cannot understand Odia. If
so, then we'll be talking Uh, in. Okay, ma'am. I'll just introduce a few persons from outside. Yeah. I mean, outside Odisha. I'd like to also interact with them because we're having Professor Annath Prasad Tripathi from Odisha, Annath Mendalin Sir from DOC, District Organizing Commission from Sonpur. Then we're having some students, college students, and friends from Parlakemundi. Then Chitaranjan Kabisa from Aurangabad. Then we're having Dr. Harinder Singh Jadon from MP, and we're having Mohammad Doshama, the resource person from School and Mass Education. Then we are having Pranati from Priyambada, Dr. Priyambada Samal. She's from Bhubaneswar, but she is a poet. And we are having some few friends from outside. Yes, Sonu Kumar, the journalist from Bihar. And Okay. yeah, they understood Odia, no problem, but the Hindi will in between will happy, they will be happy. And Sunita ma'am from also from Bihar, and some more also they'll join. Okay, ma'am. No issues, no issues. I just wanted to know. I just wanted to know who are the audience, because many a time we just flow with our flow only. We forget who are they, who are listening to us. So a very good evening to all of you, and I hope I could deliver what you are expecting from me. Um, so today we always celebrate on 7th April as World Health Day. So today is the 70, this year is the 75th year of WHO that has been constituted in back in 1948. So we are this year is marked as 75th anniversary year of WHO, and for this the various themes are being placed every year. Like every year has a different theme. So for this year, the theme is health for all, or सबके लिए स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य सबके लिए. जैसे आप you are listening, you are saying health for all. What do you mean by health for all? First of all, what is health? When we are saying health, we always see कि it is something that is not, we are not diseased, right? We are, when we are talking about health, we consider that someone without disease, right? But this is not the concept. Health is just a wholesome thing. What I would say, it is like spiritual health, mental health. Your well-being is different dimensions, right? So it is not only the physical health that you have. आपको कहीं घुटनों पे दर्द हो रहा है, कहीं दिल का दौरा पड़ रहा है, तो yes, of course your physical health is affected, but how is your mental health? How is your spiritual health? How is your environmental health, right? So when we say health for all, we say it is just providing a affordable health to each and everybody on this earth, right? It is irrespective of in which region he or she is staying, irrespective of the gender, age, caste, religion, race, everything, irrespective of everything, when we can provide affordable and quality health services to everybody. So this is an opportunity this year to see how WHO has been working this last 75 years. So Ajay, doctor, what I would suggest that most of you are, apart from some doctors or some paramedical personnel, others think that if you go to a doctor only when you are अब बीमार हो तभी आप डॉक्टर के पास जाते हो, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है तभी डॉक्टर के पास जाते हो. हम ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कम्युनिटी मेडिसिन एंड फैमिली मेडिसिन, पहले और बहुत जगह पे ये इसको ऐसे बुलाते हैं कि सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन. एंड Namita madam, it was not a new branch, it was there since the inception of medicine, but the name is very different from place to place.
or from time to time, the name of our stream has been changed. Like previously, it was called PSM, Preventive and Social Medicine. After some time, it was called Social and Preventive Medicine. Sometime it is called Community Medicine. Now it is Community Medicine and Family Medicine. So why this? Let me take few minutes to explain you what is this social and preventive medicine. We are not working for one individual, right? When you have arthritis. Let me take simple example of arthritis, right? You have arthritis and then you go to a doctor. What is your concern? He only asks about that pain in your knee or somewhere, right? What a doctor of community medicine and family medicine does, she wants or he wants to know why this arthritis. How is your lifestyle? Like madam was telling about that your lifestyle, your diseases are associated with your lifestyle, right? There are very few diseases which are due to some standalone causes, like some genetic cause. Okay, you are leading a very good life, but still you are very strict in your diet. You are doing physical activity, everything you are doing, still you get some diseases, but it is due to, I'm sorry, I'm staying just nearby airport, so sometime you will be hearing some noise. So it's a genetic factor. But most of the diseases are due to some lifestyle disorders और lifestyle जिसको हम कहते हैं कि आपके लाइफस्टाइल में आप जैसे आप जीवन बिताते हो उस पे निर्भर करता है कि आप किस किस बीमारी को दूर भगा सकते हो या फिर पास बुला सकते हो. ठीक है, जैसे मैडम बोल रहे थे कि ओबेसिटी, राइट? सो nowadays after COVID we are observing that most of the adolescent and school children are obese or malnourished. The two spectrum are there. Like malnourishment जिसको बोलते हैं उसका दो spectrum है, एक है over nutrition, एक है under nutrition, right? So both are increasing. Over nutrition भी increase, obesity increase कर रहा है because people last 2-3 years students are not going to schools, they are just bounded within their homes and not doing any physical activity. So there is an increasing trend or rise of prevalence of obesity among the children and adolescents. In the other hand, the people who are belonging to lower socioeconomic status, जैसे मजदूर लोग हुए, फार्मर्स हुए, जिनको काम नहीं मिला, उन लोगों में अंडर न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है दिखने को मिल रहा, राइट? सो दो तरह की है. और क्या होता है, how you prevent a disease? This can be prevented in different ways. Like first is हम जिसको बोलते हैं प्राइमोडियल प्रिवेंशन. प्राइमोडियल मीन्स आपके पास रिस्क फैक्टर होने से पहले ही आप अगर उसको प्रिवेंट करोगे. जैसे आपके घर में मोटापन नहीं है, जेनेटिकली नोबडी इज ओबेस इन योर फैमिली, राइट? और आप लोग का खाना पीना बहुत सही है, फिर भी कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, राइट? एंड यू आर डूइंग एक्सरसाइज, योगा, फिजिकल एक्सरसाइज, सब कुछ कर रहे हो, it will be called as primordial prevention. मतलब आप रिस्क होने से पहले ही आप सजाग हो गए and you are doing. Primary prevention, suppose आपके घर में like in our family obesity is a thing, normal thing, ठीक है? तो ये क्या होता है, आपके पास रिस्क है तो जहाँ पे वहां पे आप ध्यान रखते हो, अपने खान पीने का ध्यान रखते हो, आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, और वहां पे इसको प्राइमरी प्रिवेंशन. और सेकेंडरी किसको प्रिवेंशन बोलेंगे, जब आप ऑलरेडी ओबेज हो, बहुत ओबेज हो, नाउ आप आइदर कोई सर्जिकल ऑपरेशन, बहुत ओबेज हो, ठीक है, तो उसमें जाके आप सर्जिकल ऑपरेशंस करते हो या फिर कुछ करते हो, उसको हम सेकेंडरी बोलेंगे. टर्शियरी कैसे प्रिवेंशन करेंगे, आप जब कॉम्प्लिकेशंस को आप प्रिवेंट करते हो.
ठीक है. So madam, just tell me what are the things this audience wants to know, because we help for all is it like a platter. So in this 20 minutes or 25 minutes, I may not be able to cover everything that will be suitable for this audience. So any particular thing, or you can ask me questions, I can answer, or this can be interactive section also, if you feel so, because I don't see this these are very common topics, right? These are very common, like आप लोग स्कूल में भी पढ़ते हो, यहाँ पे भी अगर कोई स्कूल के बच्चे होंगे वो स्कूल में भी पढ़ते हो कि आपको वैक्सीन लेना होता है, आपको खान पीन पे ध्यान रखना होता है, आपके फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर ध्यान रखना होता है, आपके मेंटल हेल्थ पे आपको ध्यान रखना पड़ता है. So all these things are part of health for all, right? So I would like to answer your questions if you have any, or we can talk on a specific like environmental health. जैसे हमने कहा health का different dimensions होता है, spiritual, mental, physical, environmental, social, सब कुछ होता है. तो environmental health क्या होता है? जैसे आपका आजकल देखोगे कि जब आप like 20-30 years back, ठीक है, मई के महीने में गर्मी होती, राइट? द समर वैकेशन स्टार्टेड मई और जून तक चलता था, तभी गर्मी होता था. अभी आपको गर्मी फरवरी में लग रहा है, ठीक है. तो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट इतने हैं. अभी आप देखना, इतना गर्मी हो रही है, इतना गर्मी हो रही है कि बहुत सारे मतलब आपको हेडेक, सनस्ट्रोक तो आपको मालूम भी नहीं होगा ना. हम ओडिया बुक में पढ़ते थे कि जो क्या बोलते हैं उसको, गर्मी का जो महीना वो कौन सा महीना होता है, जो जून के, मई और जून के महीने में, उससे पहले तो इट वाज बसंत ऋतु होता था. इट वाज सो स्प्रिंग सीजन जो होता था. बट नाउ you see spring season has vanished. I don't find any spring season now. ठीक है, it is either a little bit of we are talking about Odisha, शायद बिहार और उत्तर प्रदेश में अभी भी ठंड है. हम we are feeling just for few days in December and January 15 तक. इसके बाद it's only hot, right? And what about the rainy season? Either we are getting heavy rain or drought, right? So all these are happening due to climate change, and this has direct effect on our health. How, you will ask? See what we are experiencing: extreme hot or extreme cold, and these have effect directly on physical health and sometimes on mental health, right? इतना गर्मी में आपका मन नहीं लगता काम में, झगड़ा हो जाता है. People don't realize that it is due to this extreme hot or extreme weather, right? Next is your like आपके physical health हो गया आपका. It has effect on harvest. आपके farmers लोगों का harvest पे कभी बहुत ज्यादा बारिश, कभी कम बारिश. So climate change is one of the important aspect that we should look after. And I'm seeing a lot of young people are here, and I will appeal to them, please take care of your surrounding, take care of your environment, because you will be facing all these problems, because we are facing along with us, you are also be facing more and more of this climate, the effect of climate change, right? So ये तो बोलने की बात है कि पेड़ उगाओ, ये ना करो, but we can do very little things to save our planet, like save water. आप सावर के नीचे नहा के आप 2 बाल्टी पानी में नहा सकते हो, ठीक है. एवरी डे अगर आप लाइट पूरे घर का आप आधे घंटे के लिए भी बंद कर दो तो यू आर कंजर्विंग एनर्जी. आप थोड़ा कम पानी यूज करोगे, थोड़ा आप नल खुला मत छोड़ोगे, कहीं पे खुला नल है, पानी टपक रहा है, उसको आप ठीक करोगे. दीज आर स्मॉल थिंग्स, राइट?
which can be taken care of. आप प्लास्टिक का यूज नहीं करोगे, आजकल हम लोग थैला लेके जा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कहीं पे मॉल पे जाए तो वहां पे प्लास्टिक के बैग बैन मतलब नहीं दे रहे हैं, आइदर पेपर बैग्स और क्लॉथ्स के बैग्स दे रहे हैं. सो दीज थिंग्स नीड्स टू बी टेकन केयर. छोटे छोटे हैं नुस्खे, छोटी छोटी बातें हैं होती हैं, बट दीज हैव बिगर इम्पैक्ट. लाइक आप प्लास्टिक की बॉटल में पानी ना लेके स्टील के बॉटल में पानी लेके चले, ठीक है. आप स्पून जो थ्रो यूज एंड थ्रो स्पून्स यूज ना करके आप घर से आप अपना स्टील ये वाला लेके जा सकते हैं, ठीक है. तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिसके ध्यान रखने पे हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके निकाल सकते हैं, एंड वी कैन हेल्प climate change. We can revert the climate change, right? So it is one thing. Another thing is one health. Health for all में और एक concept होता है one health. Means previously we are only focusing on human beings. हम कैसे अच्छा रहें, ठीक है. But one health concept is like where from you are getting your disease. Suppose आपको anthrax हुआ. anthrax का नाम जानते हैं? चलो anthrax हम भूल जाते हैं. आपको फ्लू जो भी होता है उसका भी कैरियर सम एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना. सो जैसे स्वाइन फ्लू हो, या फिर आपका जिसमें पिग होता है उसका कैरियर. तो these animals are in somewhere and somehow related to us in creating or having the disease. So we need to take care कि कैसे इनमें जो वेटनरी साइंस है that also should develop, and उनमें भी डिजीज कम, ठीक है. सो नाउ वी आर इंटीग्रेटिंग कि ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, प्लैनेट हेल्थ सब कुछ हो, सो दैट एक होलिस्टिक अप्रोच, राइट. तो दैट इज वन थिंग. नेक्स्ट कमिंग टू योर मेंटल हेल्थ, राइट. सो मेंटल हेल्थ मतलब क्या, आप जब भी मेंटल हेल्थ बोल देते हो ना तो इट इज लाइक ए टैबू. नहीं मैं ठीक हूँ, आई डोंट हैव डिप्रेशन, आई डोंट हैव एंजाइटी. लोग उसे एक टैबू, मुझे कैसे मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम होगा, आई एम सो स्ट्रांग, राइट. सो इट इज नथिंग टू डू विथ योर स्ट्रेंथ, राइट. यू मे बी वेरी स्ट्रांग, बट एट सम टाइम एट एनी पॉइंट ऑफ योर लाइफ यू कैन बी सेकंड ऑफ, राइट. कोई भी इंसिडेंट होगा. And that I realized when I lost my father. कि नहीं, strength is not crying is not your strength, right? You can cry, still you can be the strongest person in that room. How you handle your emotion, how you handle your this portion. Okay, so मुझे कुछ नहीं लगता, मैं कुछ सोचती नहीं हूँ. No, if some bad thoughts, negative thoughts are coming, please share with someone whom you think will understand you, right? So for the young generation, again I am appealing, डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना नॉर्मल चीज है, ठीक है. आप सिचुएशन आपका कोई होता है, एग्जाम है, रिलैक्स्ड है, ठीक है भाई, उसका नेचर है. आप रिलैक्स नहीं हो पा रहे हो तो टेक इट. डोंट थिंक भाई वो इतना रिलैक्स रहता है, मुझे क्यों इतना एंजाइटी होता है. ठीक है, एंजाइटी होता है, विल लुक फॉर द सॉल्यूशन. क्या करने से मुझे अच्छा लगता है. इट इज नॉट, इट इज ऑलवेज फेसिंग द प्रॉब्लम हेड ऑन, ठीक है. आप जो प्रॉब्लम है उसको हेड ऑन आपको फेस करना है. आप जितना भागेंगे एक प्रॉब्लम से वो उतना ही आपके पीछा करेगा. So don't avoid the problem. Face it, discuss with your seniors, discuss with your parents, discuss with your family members, and find out the solution for that. Right? It is never, कोई आपको क्या बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. How you are handling yourself. Right? So I will give that example about my father. So he passed away 1 year back, and I took almost 1 year to get over that. It's okay. It's okay that I took so much of time. ठीक है.
because it is my life. I will take that time. Nobody on this earth will tell me, यार ये क्या है, क्या मतलब मना रहे हो, ठीक है ना? But he was my father. It is my decision when I will get over that. If I'm not affecting my work, if I'm not affecting anybody's life, right? So take your time. Don't harm anybody. Don't harm yourself. That is the first thing. Don't harm yourself. Because the soul that you have been given is the best gift. The body that has been given to you is the best gift. And never underestimate the gift. ठीक है? आप गुस्सा करके छत से कूद पड़ेंगे, गुस्सा हो गए, आप क्या अपना हाथ काट लेंगे. What is that? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो वो नहीं है ना. तो मेंटल हेल्थ में जब भी हम बोलते हैं, कभी भी बात करते हैं, तो वी ऑलवेज टेल द क्लाइंट, और आपको आप पेशेंट्स नहीं, आप ऑडियंस हो, हम ये बोलते हैं कि प्लीज टॉक टू योर नियर एंड डियर हु विल अंडरस्टैंड. प्लीज मेक देम सिट विथ यू एंड टॉक टू. So another example of like because I'm working, both me and my husband are working, so my kids are all left alone. So my mother-in-law, my father, they take care of them. So in the span of 6 months, I lost both of them. Okay, so that was another, and it is due to COVID. And it was another shock for my kids also. Okay, they didn't get their parents because I was so disturbed. They lost their grandparents who are very close to them. So can you imagine how I'm not telling this story just to since कोई मतलब ये करने के लिए, या फिर I don't want कि, because I want you to learn from this. My son came to me and told me he was in class 7, he is now class 8. Take me to the psychologist. I am feeling weird. Right? Why it happened? If mothers or parents are there also in this audience, I would appeal, please listen to it very carefully. Why my child came to me and told me, please take to me a psychologist, because I'm not comfortable discussing with you what are my problems. Because we have created one environment, though we are not around them 24/7, but we have created one environment around them that they are feel free to discuss anything with us, right? So whoever parents are there, please give your children space to discuss any nonsense they have in their minds, and don't interrupt them while they are discussing their a nonsense thing, what you think these are nonsense things, or these are very normal things that happens. And when you are handling a adolescent boy or girl, it is very difficult, right? आपके जमाने में आपने वो क्रॉस करके आगे होंगे, आपको शायद याद नहीं है कितने वर्ड थे आप. ठीक है, अभी मुझे भी लगता है मैं भी कितनी अजीब थी. ठीक है, so these things happens. And आजकल मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है, बिकॉज पीपल हैव अंडरस्टूड द फिजिकल हेल्थ. Doctors availability is there, medical facilities are there, people are rushing to any kind of help for physical health, but people are not going or coming forward for mental health help, right? So we have some numbers, telemanas state government has started, so you can take help of that, right? And talk out. Please vent out your thoughts. It can be very nonsense, all can be useless thoughts, but please talk out. Please vent out your thoughts so that it will be easier to process. आप सारा कुछ यहाँ पे रखोगे तो वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा. So I'm
मोर ऑफ मैं बहुत ज्यादा भाषण देने लगी, सो सॉरी इतना, but I always feel mental health is of utmost importance. Next is your spiritual health. And spiritual health is nothing to do with your religion, with your prayer or anything else, right? I'm not saying. Spiritual health is knowing yourself. So keep quiet for at least 5 minutes and think why you are here. Why? What's the purpose of your life? And connect to someone higher energy, some higher energy. It can be your Jesus Christ, it can be your Siva, it can be your Allah, whoever. Just connect to him or her. The way, like talking to him, connecting to him, like listening your inner self, what it is talking to you. Because when you sit down, suppose you today you have a fight with your colleague, right? Or with your friend. Now, every time as a human being, what we want to win. We want to justify that whatever we have done is right. But when you are all alone, okay, when you are all alone, you are by yourself, you know that you have done a wrong thing. Isn't it? It has happened many a times with us, right? And that time, when you realize that I have done a wrong thing, accept it. Okay. Say sorry to the Almighty. Then go back to that person. Say sorry to him. You won't be lesser than what you are today if you say sorry to somebody. Okay. It will just keep the mental peace. Your balance, mental balance will be there. That's it. People will say ना हाँ देखो मैंने बोला था ना उसको वो आके sorry बोली. ठीक है. What you are feeling after saying sorry, if you are feeling relaxed that some baggage, some garbage has been gone, then it's okay. I will say 100 times sorry to everybody that come in my path and causing any disturbance in my head. Okay, that is another aspect of ignoring thing or your spiritual health. I consider it as a spiritual health. It can be because it is spiritual health is like उनका जो dimensions होता है, it is a very what I would say. I'm not able to define it how it is, but when you practice it, forgiving, forgetting, all those things, relating to some higher energy, you will feel you are blessed. You just count down what are the things you have in your life, and you will see you have everything that you have ever wished, right? So आपको ये लगेगा हाँ मैडम डॉक्टर बन गई इसलिए बोलते हैं, नहीं, ये तो एक प्रोफेशन है, राइट? Just small things that makes you happy. Like just today is a holiday for us, so once in a while we get this type of luxury. So just watching a movie with your family can be a kind of happiness if you're getting that. But उसी happiness में अगर 10 बार फोन आए आप किसी पे चिल्ला रहे हो, it is not done, right? So find out the happinesses, the points where you are being ignited, right? So this is one of the spiritual health. I'm not a spiritual guru. I cannot talk much about it, but I would suggest you एक टाइम फिक्स करें. बच्चों के लिए है कि एक प्रेयर करने के लिए एक टाइम फिक्स करें. उसका मतलब आए ना आए कुछ दिन के लिए बच्चे करें, इसके बाद वो आदत पड़ जाती है, then it will be part of your life, right? Then coming to social health. Social health is something it is related to your mental and spiritual health. अगर आपका mental and spiritual health ठीक नहीं है तो आपका social health भी ठीक नहीं हो. Social health means how you were behaving with your colleagues, with your friends, with your neighbors. कैसा है आपका relationship? ठीक है. कोई होते हैं बहुत अच्छे होते हैं सबके साथ, कोई होते हैं किसी के साथ उनका पड़ता नहीं. तो when it happens, just look back. Is the fault is with me or is the fault with the others? हमें क्या होता है, हम मनुष्य लोगों को दूसरों का गलती बहुत ज्यादा दिखता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा दिखता है. हमारे उड़िया में है ना, छुंची को है चालूनी को,
ना चालू नहीं कहे छुंची को सारे। तो ये जो छलनी होता है ना उसके कितने सारे छेद होते हैं, बट वो सुई को बोलता है देखो तुम्हारे पीछे और एक छेद है। तो वही है, हमारा नेचर भी वही होता है। सो प्लीज डोंट बी ए छलनी, यू हैव योर छलनी बने आप सब, हम सब छलनी हैं, बस सुई जो है उनको कुछ दिखाना नहीं है, हम छलनी हैं उनको बंद करना। छलनी का भी अपना काम होता है, अपना जो प्रकृति होता है वो भी काम में आ जाता है। सो इट्स ओके, ठीक है। सो वी डिस्कस्ड अबाउट फिजिकल हेल्थ के बारे में मुझे बोलना नहीं है, आप सब जानते हैं कि आपको एक बैलेंस्ड डाइट चाहिए। बैलेंस्ड डाइट मतलब हम आजकल बहुत ज्यादा भागते हैं, हमको ऑलिव ऑयल खाना है, हमको क्विनो, या फिर जब भी मॉल्स में जाओगे ना इतने सारे चीजें होते हैं। नहीं, यू स्टिक टू योर ओरिजिनल फूड हैबिट्स that your mother was preparing, your grandmother was preparing, that was absolutely okay for we Indians, right? हमें oats चलेगा, oats is healthy, I'm not saying it is not healthy, but it is costly if you cannot eat that. मांडिया जो रागी होता था पहले, वो गरीबों का खाना होता था, आज अमीर लोग खाते हैं, ठीक है ना, इतना कॉस्टली हो गया। सो मिलेट्स खाइए, millets is very good, all this ragi, bajra, all these things that is available, वो खाइए। सो आपके प्लेट में, फॉर ए जनरल, आपके प्लेट में उसको अगर हाफ करेंगे, हाफ आप हाफ शुड बी कलरफुल with vegetables and fruits, right? एंड जो हाफ बचा है खाली, उसमें उसको फिर हाफ करेंगे, उसमें उसके हाफ में प्रोटीन्स रखेंगे और उसके दूसरे हाफ में आप कार्बोहाइड्रेट रखें। कार्बोहाइड्रेट मतलब चावल या रोटी, प्रोटीन मतलब पनीर हुआ, एग हुआ। अगर आप वेजिटेरियन है तो आपका छोले, all these things like दाल, छोले, all those things are rich in proteins, right? So आपको बहुत सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और दाल, पनीर, सब्जी बहुत ज्यादा खाना है। बहुत ज्यादा मतलब बैलेंस्ड वे में, जैसे मैंने कहा, एक प्लेट को आप हाफ करके, हाफ आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाइए, जो हाफ बचा है उसका हाफ आप प्रोटीन और हाफ आप कार्बोहाइड्रेट खा सकते हैं। अगेन कमिंग टू फिजिकल हेल्थ में, एक्सरसाइज वी प्रेस्क्राइब एवरीबडी शुड डू एटलीस्ट हाफ एन आवर वॉक, ठीक है, ब्रिस्क वॉकिंग for half an hour, at least for half an hour for 5 days a week. इसका मतलब आप आधा घंटा करके 5 दिन भी आप चलेंगे तो इट इज ओके, ठीक है। सो ब्रिस्क वॉकिंग मतलब ऐसा नहीं आप चलने निकले और सास बहू के सीरियल के बारे में बात कर रहे हैं या फिर आप गप्पे मार रहे हैं, दैट वोंट हेल्प यू, ठीक है। ब्रिस्क वॉकिंग मतलब इफ यू कैन नॉट सिंग योर फेवरेट सॉन्ग, उसको आपका सांस फूलने लगेगा, देन इट इज ब्रिस्क वॉकिंग। ऐसा नहीं कि आप चलते चलते गप्पे मारते मारते आपने 1.5 घंटा चल दिए और फिर एवरी डे यू आर कमिंग बैक स्टैंडिंग ऑन योर वेइंग मशीन एंड इट इज शोइंग द सेम रिजल्ट, ठीक है। हम फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, अरे यार कुछ नहीं होता है, छोड़ो ये सब सिर्फ बातें हैं। नहीं, यू कैन, ओके, लेकिन कंसिस्टेंसी ये भी होता है कि बोलने के लिए तो हम लोग भी बोल देते हैं, हम भी कंसिस्टेंट कहाँ होते हैं, ठीक है, बट वी नीड टू ट्राई, वी नीड टू ट्राई, वी नीड टू स्टिक टू द रूटीन्स, राइट। ये गया आपका फिजिकल हेल्थ का। और एक एस्पेक्ट हुआ, डाइट हो गया, फिजिकल एक्टिविटी हो गया। नेक्स्ट इज योर एडिक्शन, ठीक है। टोबैको आजकल बहुत ज्यादा, बच्चों में भी, हम स्कूल में भी जाते हैं तो बहुत देखते हैं। अर्बन में थोड़ा कम है, लेकिन अर्बन में कम मतलब प्राइवेट स्कूल्स में कम है, लेकिन थोड़े स्लम एरिया में बहुत ज्यादा है बच्चों में वो गुटखा खाना, ठीक है। सो ये तो बता बता के हम थक भी चुके हैं कि प्लीज मत खाइए, क्योंकि द मोस्ट important risk factor for any non-communicable disease, non-communicable disease मतलब जो एक दूसरे संक्रमित नहीं होता है, जैसे डायबिटीज हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, किडनी डिजीज हुआ, all these have single cause, that is tobacco। और जो आप गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो इसका हम क्या करें? आप अगर नहीं समझेंगे
ठीक है, वो कंपनी तो अपना पैसा कमा रहा है बेच बेच के, ठीक है, वो शाहरुख खान को लिया था, अजय देवगन को लिया, फिर अक्षय कुमार को भी ले लिया, तो इतना पैसा तो है उसके पास कि ये तीनों एक्टर्स को ही कैन स्पॉन्सर। बट आप सोचिए अगर आपको कैंसर होगा तो वो लोग नहीं आएंगे आपके पास, दे वोंट ट्रीट यू, दे वोंट हेल्प यू टू ट्रीट। हाँ, थोड़ा फंड रेजिंग हो जाएगा कहीं से, आपका कोई जान पहचान का है, बट हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू, टेल मी, if you are not you are not conscious about your health। यहीं पे और एक बात भी बोलूंगी, आप एक दवाई एक दिन खाने के बाद आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, राइट, और आप आके बोलते हैं वो डॉक्टर अच्छा नहीं है, 2 दिन दवाई खाए अभी तक बुखार नहीं कम होता है, ठीक है, लेकिन आपने गोलगप्पे खाए, जलेबी खाया, उसका कुछ नहीं है। सो आपका सोच बदलना पड़ेगा, ठीक है। आप रोज जो गोलगप्पे के यहाँ पे कोई मदर्स होंगे तो आप बच्चे को लाने जाते हैं और बातें करते करे वहीं पे ठेले पे आप खा लेते हैं, तब नहीं सोचते कि ओवर ईटिंग हो गया। ये तो ये सब सोचने वाली बात है, राइट। नेक्स्ट इज जैसे टोबैको हुआ, नेक्स्ट इज अभी क्या होता है इंडियंस में डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, और हमें मीठा खाने की भी बहुत, मतलब कोई भी फेस्टिवल आ जाए इट विल स्टार्ट विथ समथिंग स्वीट, ठीक है, एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ यू आर फ्रॉम एनी स्टेट, ठीक है, हमारा मिठाई पे ही पीएचडी है सबके घर में, isn't it? So ये सब आपको करना पड़ेगा। अब दिस वेबिनार आई थिंक कल शायद स्टेट गवर्नमेंट का छुट्टी भी है, इफ यू आर देयर यू कैन जस्ट गेट अप, वॉक फॉर 30 मिनट्स, थोड़ा हाँपने तक आप वॉक करें, ऐसा नहीं कि गप्पे मार मार के फिर चाय पी के आ जाए, ठीक है। सो ये होता है ना हमारे घर में भी, चाय आप बिना चीनी के पीते हैं लेकिन उसके साथ 2-4 कुकीज खा लेंगे। सो ये सब आदत छोटी छोटी बातें होती है, ये बहुत बड़ी बातें नहीं है, ये हम लोग ना समझाते भी नहीं, ओपीडी में इतने पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, तो ये एक मौका मिला मुझे थोड़ा बोलने के लिए, सो आई वाज टॉकिंग ऑल दिस थिंग्स। तो almost we covered every aspect of health, and next is your आपका एनवायरमेंट में जो भी है, जैसे आपको देख के दूसरे सीखते हैं, ठीक है, सो आपके घर में भी हो या फिर आपके ऑफिस में भी हो या फिर आपके वर्क प्लेस में भी हो, सो व्हेन यू आर स्टिकिंग टू योर रूटीन्स, लोग पहले कुछ बोलेंगे पागल है, ऐसे क्या है, इतना क्या करना, बट रिमेम्बर प्रैक्टिस आप हर दिन करोगे तो ये आपका जो हैबिट ना वो लाइफ स्टाइल बन जाएगा, और जो लाइफ स्टाइल बन जाएगा वो आप है, ठीक है। तो जैसे आई कैन गिव यू वन एग्जांपल, वन ऑफ माय सीनियर ही यूज्ड टू वॉक टू द हॉस्पिटल व्हिच इज 2 किलोमीटर्स, ठीक है, तो हम बोलते थे क्या यार चल के आते हैं, डॉक्टर बन गए, एक स्कूटी भी नहीं लेते हैं, ठीक है, बट हाँ मेरा घर 500 मीटर में भी नहीं था, मैं स्कूटी से पहुंच जाती थी। नाउ आई एम सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, इतने कम एज में, ही इज स्टिल यंग, मुझसे 8-10 साल बड़े होंगे, उस टाइम पे भी वो जैसे थे, बिकॉज he has been sticking to his lifestyle, he never listened to anybody, he will never touch a cup of tea in the OPD, ठीक है, कभी चाय नहीं पियेंगे। तो हमको गुस्सा आता है क्या स्टाइल मारते हैं, चाय, 1 कप चाय में क्या हो जाता है, तो 1 कप कर करके कोई आया दिन में 3-4 कप हो जाते हैं, और 3 कप चाय मतलब 3 to 4 टेबल स्पून ऑफ शुगर, राइट। सो ये आदतें होती, ठीक है, तो आपको ये आदतें बनना मतलब आपको ये आदत को छोड़ना पड़ेगा, तो चाहे कोई भी कुछ कहे, क्योंकि हमारे ऊपर एक पीयर प्रेशर होता है, ठीक है, आप अगर नहीं जाओगे नहीं पियोगे
टपरी पे नहीं हो चाय के, तो लोग क्या बोलेंगे, यार एंटी सोशल है, तो चलो पी लेते हैं। ठीक है, हम एंटी सोशल भी नहीं होंगे, हम जाएंगे दोस्तों के साथ, बट ना सिगरेट पियेंगे, ना हमें जरूरत है तो चाय पियेंगे, बिना चीनी के नहीं है तो हम नहीं पियेंगे। ठीक है, सो मेक ए स्ट्रिक्ट लिस्ट फॉर योरसेल्फ, इट इज यू हु कैन हैंडल योरसेल्फ। ठीक है, सो आई थिंक मैंने बहुत ज्यादा बोला। तो आई एम ए टीचर ऑल्सो, मेडिकल टीचर, सो ये आदत है, अगर कोई टीचर्स यहाँ पे भी होंगे वो दे कैन रिलेट कि हमें छोड़ दिया जाए तो हम बस बोलते जाएंगे। सॉरी इफ सो थैंक Maximum teacher. Maximum teacher. over to you madam. बहुत Thank you. सुंदर, बहुत सुंदर, beautiful. So may I request the floor? Do you have any question? You can write down in the chat box. Then we'll select the question or we'll ask the particular person to ask the question. So one after another, you can ask the question. She has covered almost all the corner. So nicely, and being a professional teacher can do like this. So she has gone all the, from each corner, starting from environment to hygiene, from your temperament to anxiety, all that things she has covered, and very nicely. What actually we're looking for. So, do you have any question, please? May I check the chat box, please? Yes, we are having Dr. Manoj Kumar Das. Thank you very much for joining us. Mrs. Buni Sahu, thank you. But the question is very informative. We know, Jyotisha, because you are also a teacher. But question is, there are very regular aspect of health which you do want to ask ma'am, not in the medical term, but in your aspect. ଯେମିତି କି ମ୍ୟାଡାମ ବୁଝେଇଲେ ଯୋଉ ବଢିଆ ବଢିଆ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ବାପା ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ଟା କଣ ହଉଛି ଆଉ ଆମେ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ କୁ କେମିତି कंट्रोल କରିବା ବା ନିଜେ ନିଜେ କେମିତି ରିମେଡି ଟା ଆଣିବା, ଇଟ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ थिंग्स। So यदि कार क्वेश्चन थाए प्लीज यू आस्क। सोनू भैया, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नमिता दीदी हाँ, नमस्कार। नमस्ते। और सबसे बड़ी बात है कि मैम ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, इसमें मेरे कोई सवाल नहीं है। हेल्थ से रिलेटेड का विषय है और जो भी बारीकी बातें सुनना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हेल्थ जो दिनचर्या का जीवन में जो हम करते हैं उससे रिलेटेड की बातें होती हैं। और मैम ने जो भी बातें बताई बहुत अच्छा लगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव बातें बताई, कोई सवाल मन में नहीं। लेकिन एक चीज था जो नए नए चीजों को जानने के लिए मिला, नए नए बातों को सुनने को मिला भी, और नई नई बातें हमें उसे करने के लिए मिला। बस हम इतना जरूर कहेंगे कि पॉजिटिव से ही हम सारी चीजों को, समस्याओं का हल हो सकता है। मैम की बातें इसी पर आधारित थी और हमारा हेल्थ यही कहता है। क्योंकि अब मान लीजिए कोई लड़का टॉफी खाता है बच्चा, और वो टॉफी खाता है और टॉफी से रिलेटेड होता है क्या कि जैसे हम चाय पीते हैं उसमें भी क्या पाया जाता है, शायद मुंह पे मेरे नहीं आ रहा है, उसमें भी जो चीजें पाई जाती है वो चॉकलेट में भी पाई जाती है, तो वो भी हेल्थ से रिलेटेड की चीजें होती है। छोटी छोटी चीजें से ही हम बड़े बड़े बदलाव कर सकते हैं, तो सकारात्मकता से ही किसी चीज का बदलाव हो सकता है। मैम की बातें यही थी, और मैम ने जो बातें बताई, कुछ बातें समझ में आई, कुछ बातें मुझे समझ में नहीं भी आई क्योंकि भाषाओं का प्रॉब्लम था, इसलिए करके मैम बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके कोई पीपीटी होंगे तो आप जरूर आप मैम से शेयर कर दीजिएगा ताकि उससे हम कुछ लाभान्वित हो सके। सोनू जी, मेरे पास कोई पीपीटी नहीं है। मैं तो यहाँ पे एक्चुअली एक नाम लिख रही थी कि मैं आपको एड्रेस कर पाऊँ। ठीक है, तो एक्चुअली हम लोग टीचर्स लोग होते हैं तो पढ़ाने के लिए ज्यादा पीपीटी की जरूरत नहीं है, या फिर आप पीपीटी लेके जाओ तो बच्चे सुनते नहीं है। ठीक है, वो बात बिल्कुल। तो पीपीटी तो नहीं है, बट यस, कोई बात नहीं मैम कोई बात नहीं, ये पीपीटी नहीं है मगर नमिता दीदी के माध्यम से रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग को सुना जा सकता है। या रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, या फिर कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में तो हम यहाँ पे बिना हिचकिचाए जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि कभी कभी ये होता है आई एम नॉट सब जानती, ऐसा नहीं हूँ,
we have our weaknesses. बहुत बातें होती हैं जो हमें भी नहीं पता होता है. So I will go back, look for the answers and will come back. मैम चर्चाएं इसीलिए तो होती हैं. चर्चाएं कोरोना काल के बाद से इस जो सबसे बड़ा माध्यम मिल गया, गूगल मीट, जूम, ये चर्चाएं का माध्यम तो बना कुछ जानने के लिए. Yes. कुछ ज्यादा ही बहुत मतलब इन पैंडेमिक तो वायरस का भी हुआ और इंफॉर्मेशन का भी पैंडेमिक हो गया. इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन सबके पास हुआ कि कंफ्यूज आ गए सारे. आज भी मैम, आज भी देखे ना, बिहार में जो हालात पैदा हैं नालंदा और रोहतास में, और नालंदा जिला के बारे में आपने न्यूज में भी पढ़ा होगा कि अभी रामनवमी को लेकर जुलूस निकाला गया, उसमें भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा हो रहे हैं. ये सोशल मीडिया का एक सिलसिला जो चल रहा है. अभी भी वहाँ देखिए नेट बंद है. हमारे बगल का जिला है बट वहाँ नेट बंद है. वो तो हम उस पे नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, yes, health has social media has a very what I would say, it has both the positive and negative impact on health. And like madam said, we always do some kind of research along with seeing patients and teaching students. We do research. So we have done it. We are going to do a research कि ये screen time और उन बच्चों के development में क्या फर्क आता है कितना. तो we are doing that. जब आएगा तो हम लोग शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ. ठीक है, थैंक यू. Yeah. So I'm so happy regarding the health health for all. We have discussed, we have listened so many things, and we have gone through many articles, many YouTube, so many things. But real things, you see, when Madam discussed, she discussed as a teacher. But I felt she's having a pen like me. She's having a notebook. I'm also noting down all the points. So nicely she has explained. Body is the best gift given by our God. So it is for the children, for the students like Dibyansu, Barsarani, Anshuman, all those children. And for adults, he says, like all the parents, those who present over here, that means she has message for all of us. Not only for me, not only for Sonu Bhaiya, but for all of them, she is having many messages, and she has shared all her learning experience. So how to take care of children and how to maintain their adolescent stage, then social, mental, physical, all three aspects of behavioral health. Then very good things I would like to brief out of all this analysis. That is, if we abbreviate the health, that is HEALTH, what I sum up from Madam's speech, that is H, let us stand for hygiene purpose. So all such hygienic, starting from hand washing or your mask, then gloves, all this related, we have to remember H for that purpose. Then what he says about E starts with exercise, starts with environment, start with engagement of the children, how to look after them. All this E stands for. Then A means after all you have to look after health. That is anxiety, starts from anxiety, ends with obesity, whatever may be. And L is very important for all of us. That is laugh and love. Your all diseases will go back. It will never come to you. And the fifth one is T. T is your temperament, your time, how to change your temperament. You are having so many sad news, that is a distress condition, so many things. So about your distress, you should not share it. But your sadness, you should not share it. But what you have to share, what experience you had it. So how nicely she has given two experience about her father's death and the parents, I mean the grandparents of her children, and how she correlates both of them. Once your last part, that is the L. H means
your attitude, helping attitude. Very That good, is, very good. that is the point I have noted down, and I want to share it because this, madam, for your knowledge, we all here assembled every weekend in the Saturday and Sunday, and this is our Obiner family. When we have any day performing any activities, we must have a analysis, and we invite a person, and with her blessing we could able to get some new information and we share it. And fortunately all our friends, they are from different corners of India. Many friends from Assam and Kashmir, they have not joined today. I do not know what happened to them, but we enjoyed a lot, madam, and we get and we enrich with knowledge. So thanks for sharing your knowledge to us, ma'am, and we're really grateful to you, to your family, your son. She has just sent her son to the school, I mean tuition, and she came back for us. That means all the doctors, they are just next to God. We believe that they are our God. Sure, really, ma'am. I'm really grateful to you. From a friend from Bihar, Mr. Sonu Kumar, he is there. He wants to extend the word of thanks. I would like to request Sonu Bhaiya to propose a vote of thanks in your own language, and we'll be very happy. On behalf of the webinar, I would like to request you, Sonu Bhaiya, and blessings from Thank I mean, you. Thanks. aged person we're having, Mr. Jadon, Mr. Jai Singh. They are very aged person, Mr. Anand Prasad Rai. But those old people, those ଆମେ ଯାହାକୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛେ ସମସ୍ତେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି. So we are very much grateful and grateful to ma'am, because being a doctor, being a professional, and being a housewife, in spite of all her busy schedule, she spared 50 minutes time to us. It's not a great thing. It's the greatest thing. So thank you, ma'am, from the core of my heart. Now I request Sonu Bhaiya. Are you there? Yes. प्लीज एक्सटेंड वर्ड ऑफ थैंक्स. आप धन्यवाद देना है आज के वेबिनार से मैम को. यस सन्नी भैया बोलिए. Okay, so formalities, we have almost done it. Now it's a virtual meeting. I must extend my heartfelt thanks to each of you, starting from Suman Garg from New Delhi to Jadon Saab from MP. So I extend a heartfelt thanks to all of you for joining this program. And once again, we will request ma'am for a particular program, for a particular disease, like communicable disease, non-communicable disease, and virus disease, non-virus disease. She will give some time to us, maybe in the next years, times to come. If she has, we'll request her. And for today, on behalf of all of you, I would like to present virtually, ma'am, a small token of love. I do not know how far she will love it, but I would like to share it because she joins us and she encourages us with her presence. That's a great thing. So that is the memento I would like to give to ma'am. So this is a small token of love to ma'am. Thank you very much. Thank you. So thank you, ma'am. Once again, I would like to request, ma'am has given me her signature. I'll share the certificates to all of you.
Just for the time being, I would like to share it so that you could have seen the certificate. I know you are very much eager to see what is the design of the certificate and how it is. I have tried my level best, and this is the certificate I would like to. Yes, this is the certificate for you. And soon after I'll get the signature, I'll incorporate here, and then you'll get it. Okay. So Very nice. okay. So once again, thanks to all of you. Now we'll have a photo, group photo. Then we'll close the recording. So now I'll सबको request photographs के लिए I will request all of you to just unlock your video. We'll have a photo. All of you, please. Rup Singh, Mr. Rup Singh, Pavitra sir. Yes. सुमन जी नमस्ते. दिल्ली से आप ज्वाइन किए हैं, बहुत धन्यवाद है. नमस्कार मैम. नमस्कार. Yes. Rajendra ma'am, namaste, namaste. Thank you very much. May I request, Sweetie, can you take one photo, please? Group photo? Yes ma'am. Okay. And more ladies are here, ma'am. So they are very happy to see you. Yeah, I'm seeing. बहुत अच्छे. आज तो सलीमा जी नहीं है, मुस्तफा जी नहीं है, कहीं क्यों नहीं ज्वाइन किया मालूम नहीं. और लोग कश्मीर से ज्वाइन करते हैं. और एवरी टाइम दे विल बी द फर्स्ट पर्सन. यू विल सी मुस्तफा जी पहले आएंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे. We females have the greatest responsibility because we are making the home, Yeah. a place, livable place, and Yes, our society is made up of all the houses that a female built, right? So we have that responsibility. So I think we should learn, or we should understand what is health more than everybody else. yes sir. राजेंद्र मैम, विद्यावती मैम, आपका फोन नंबर थोड़ा लिख दीजिए चैट बॉक्स में. ओके, बिफोर आई या. यस मैम, बोलिए. ओ विजय देखा आ गया. ओके ओके. Madam, बोलिए मैम, बोलिए. Ma'am, I have another assignment at 7:30, so it is almost. Yeah. Yes. Okay. With the permission, I will take your leave. Sure, madam. Thank You all, and I will be happy to share anything you want to know. Thank you very much. Namaskar. Shubha Sandhya. अपन मन को weekend बहुत भलो रे जाओ. Thank you, madam. Thank you so much. Now I'll request Vidya ma'am. Can you just write down your phone number? हाँ, हो गया, क्योंकि आपका फोन नंबर नहीं था. अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद हम लोग बात कर सकते हैं.